Hello guys, welcome back to my channel GravityTech. This is the next video on C programming series. This course will help you to learn C language from scratch even if you do not have any programming background. In previous videos, we have covered several topics of C programming: C language history, comparison with human language, character set, keywords, variables, constants, data types, format specifiers, printf, scanf, operators, arithmetic, bitwise, logical, relational, assignment operators, operator precedence, operator associativity, conditionals, switch cases, break statement, different types of loops, for loop, while loop, do while loop, nested loops, continuous statements, array, single dimensional, double dimensional, multi-dimensional arrays, strings, string operations, and built-in functions, right, which we use along with the strings, functions where we also saw the call by reference, call by value, recursion, structures and unions, pointers, working with structures, union, functions, arrays, strings, primary data types, type def, enum, and the storage classes. Right. So if you want to revise or clear any of these topics, these concepts, go back to the channel and watch the respective videos. In today's video, we will cover file handling in C. Guys, if you haven't subscribed yet, do subscribe to the channel as I will not be limiting this channel with C. It will also have the Python data structures with C, C++, Java, Shell, operating system, and a lot of mathematics too. So let's see now what is file handling in C, right? Yeah. So the session objectives of this video is explain files, discuss text and binary files, basic file operations and functions, file pointer, formatted, unformatted input output statements in a file, discuss current active pointer, next session topics. What are we going to cover as a part of next session? Now, what is a file? Okay, so file is like it can be anything from a disk file or to a terminal or a printer, right? A file is always associated with the stream by performing an operation and it is disassociated from a stream by closing by a close program. Now what does it mean by stream here? जब भी आप कोई अगर फाइल ओपन करते हो डबल क्लिक करके तो ओपन होके वो एक रैम में आती है, राइट? दैट इज समथिंग में भी वो एक किसी इनपुट या आउटपुट स्ट्रीम से क्या हो जाती है, एसोसिएट हो जाती है। और जब भी आप उसको क्लोज कर देते हो तो फिर से रैम से मतलब जो इनपुट आउटपुट स्ट्रीम होती है वहां से डिसएसोसिएटेड होके वापस वहां पे हम लोग रख देते हैं हार्ड डिस्क पे, राइट? दैट इज व्हाट इट मींस। Now all files are automatically closed when the program ends. प्रोग्राम एंड होने के बाद ऑटोमेटिकली सभी फाइल्स क्लोज हो जाती है जो फाइल्स उस प्रोग्राम ने ओपन की है। ओके, लेकिन अगर आपका प्रोग्राम क्रैश होता है तो फाइल्स ऑटोमेटिकली क्लोज नहीं होती है, रिमेंबर। ओके, नेक्स्ट। सो file is a place on a disk where a group of related data is stored. Simply we can call it as a collection of related information. Now there are two types of files broadly. Okay, one is what? A text file where all of the data is basically stored in terms of characters, whereas there is a binary or random file where all of the data is basically stored in the custom format. Okay, it can be like binary or it can be something else. Okay, now let me put some more points on text file and binary file. So text file is basically where the bits represent a character and binary file is where the bit represents a custom data. Text files are less prone so to get corrupted, right? As change reflects as soon as made and the change can be undone with undo, right? But binary files can easily get corrupt on even single bit change. Okay, text files store the only plain text in a file, whereas binary files can store different types of data like audio, text, image in a single file. Text files are widely used file format and can be opened in any text editor, Notepad++, Notepad, WordPad, whereas binary files are developed for some specific application and can be opened in that application only. Let's say now if you have some
MP4 format file, right? It will not be open basically in WordPad or anything, right? It will basically open in media player only, that way. So mostly text files are stored with the extension .txt, .rtf, whereas binary files can have any application defined extension, right? Now let's look at the next part. So what are the basic file operations? You can create a file, you can name a file, you can open file, we can close file, right? We can read from a file, the things can be written to a file. We can also perform some binary input output operations on a file, right? Now, what are the basic functions which we use to deal with all these file operations? So this column you will see as a function name which we actually use in a C program to deal with the file handling. And whereas what does that mean is the next column, operation column. When we say fopen is a function which helps you to create the new file or open an existing file. So if the file doesn't exist already, it will try to create the new file. Fclose, whatever file you have opened, right? This function basically helps you to close the file, that opened file. Getch, it reads a single character from a file, whereas putch, it writes a single character to a file. Fprintf and fscanf, these basically are used to read and write the set of formatted data, either to read it from the file, that is fscanf, write it to the file, that is a fprintf. Getw, w is for integer, so it will help to read an integer. So get means read and put means write, remember. So read an integer from a file, put w writes an integer to a file. Fseek sets the position to the desired point in a file. Okay, that means let's say if you are reading file and if you are somewhere in the middle, right, if you want to go back to the beginning or if you go to the end, you can use fseek function, and that will change your cursor to there. Ftell will tell you at what point or at what current position you are there and to read the file. Okay, rewind, the set of positions to the beginning of the file. So it basically sets the current position to the beginning of the file. Okay, now let's look at these functions one by one. So what is a file pointer? File pointer is a pointer to a structure which contains information about file. So whenever you open some file, right, the file, every file will have some information, file name, uh, file ID, or file type, blah blah, right? So that all information is basically a part of one structure, and that structure name is a capital FILE, file. And then when we want to open, close, or anything if we want to do with that file, we basically create that file pointer first and then use with the functions, right? That is what the file pointer is. Okay, now we'll see that actually. So but that is basically a structure. Yeah, now see, file pointer syntax is what? FILE is a structure. FILE is what? A structure star file underscore pointer underscore name. So file pointer name can be anything what you want to give, because that is variable name, whereas that variable will be of the type file star. Okay, so file star fp. Yeah, so fp is a pointer of type file, and when it will basically be having it will have address of type file type variable. Okay, now if you want to open the file, what you will just do, file star the file pointer name, then fopen file name, file mode. Okay, so example would be what? Let's say if you want to open some employee underscore record.txt file, right? We'll come to the modes, what it is, that is write mode. And so what you will basically use is you will use fopen file name and then the mode, whether you want to read from the file, whether you want to write to the file, whether you want to append to the file, right? What do you want to do? And then this function will open this file. After opening this file, this function will return an address of one structure in a memory. One structure will be created of file type, and that file type structure address will basically be stored into the fp. Now whenever we are dealing with fp will basically point to the file
opened file. Yeah. Now, if you want to, so any file, if we are you're opening in your program, you should basically close as well. So fclose is a function which you can use it to close the file. So syntax is very easy. Fclose file pointer name. So example would be what? Fclose fp. So fp is what? The one, right? Uh, File pointer by using which you have opened the file. Now, what are these file modes? Let's see. So there are different file modes you can open file with, right? So when you say W, it will basically open text file for writing. When you say R, it will open the text file for reading. When you say A, it will open text file for append. Append means the file already exists. There are some contents already in that file, and then it will basically just append to that. Yeah. When we say RB, it will open binary file for the reading. B, right? When it's WB, it will open binary file for writing. AB, it will open binary file for append. R plus, it will open file for read and write, both purpose. Okay, when you say W plus, it will create if the file does not exist, and it will open that file for read and write. See, when you say W, right, open for writing, or W plus open for write, open for writing, right, read or write, it will, even if the contents are there, it will replace those contents. Okay, but when you say A, it will append. Append means the contents will be safe as is, but the new part will be as basically appended. जो ऑलरेडी अगर डब्ल्यू आर और ए में क्या डिफरेंस है? डब्ल्यू आर तो रीडिंग के लिए, लेट्स से डब्ल्यू और ए में क्या डिफरेंस है? डब्ल्यू मतलब अगर आप जो फाइल ओपन करते हो, अगर वो फाइल ऑलरेडी है, तो जब आप नया कंटेंट उस फाइल के अंदर डालोगे, तो तब वो पहले वाला कंटेंट वैनिश हो जाएगा और नया वाला कंटेंट वहां पे चला जाएगा. लेकिन अगर आप ए यूज करते हो, अपेंड मोड, तो ऑलरेडी जो कंटेंट है वैसे के वैसे रहेगा, लेकिन नया कंटेंट जो उसके बाद अपेंड हो जाएगा उसके उसको नेक्स्ट. ओके, so that was the difference between W, R and A. Okay, so R plus read and write, W plus create if does not exist, and then read and write. R plus will try to open the existing file, but it will not create another file. A plus append or create the text file for the read or write. So if already file exists, open it, do not change the contents, and whatever new things are going to be written, right, those will be appended. And if the file does not exist, it will create the new file and then read write. R plus B, open binary file. Wherever there is a B, you will see that is a binary. RB, WB, AB, RB, R plus B, W plus B, A plus B. That all things are basically operations with them or modes for the binary files. Whereas if you don't see B, that is for the plain text file. Okay. Hopefully this is clear. We'll see the practical examples too. Now, how to write a character. To write a character, we use the fputc function. The function is used for writing a character to a file that was previously opened using the fopen pointer to a structure which contains the information about the file. So int, what is a syntax of it? It will return the integer fputc, then the which character to be written, and then in which file. The fp is the file pointer. If you want to read the file, fgetc, the function is used to read the single character from a file that was previously opened using the file pointer fp. Okay, so when you say fgetc, it will actually return you a character. Okay, and that character will basically store it into some character, let's say. Okay, when we say here int, right, that is basically returning the int, but that will be kind of ASCII format. Okay, now we saw fputc and fgetc are to deal with the single character, but if you have the string, writing a string, it is basically fput yes. S means a complete string you will able to write. The function is used for writing strings to a file that was previously opened using fopen pointer to a structure which contains the information about the file. So fput s, the syntax is like this. Whatever आपको जो भी string फाइल में इंटर करना है, राइट करना है, उस स्ट्रिंग को आप यहाँ पे दोगे कॉन्स्ट कैट स्टार एसटीआर में, और
फाइल स्टार एफपी मतलब एफपी इज द पॉइंटर जो फाइल आपने ओपन करके रखा हुआ है, एंड इट विल रिटर्न इंटीजर। इफ इट इज जीरो इट मींस इट वाज सक्सेसफुल, नॉन जीरो मतलब इट इज नॉट सक्सेसफुल। जिस तरह से हम एफ पुट एस से एक स्ट्रिंग राइट कर सकते हैं फाइल के अंदर, उसी तरीके से हम स्ट्रिंग को रीड भी कर सकते हैं। लेट्स से कंप्लीट स्ट्रिंग अगर हमको रीड करना है, राइट, सो हम एफ गेट एस यूज कर सकते हैं, कैर स्टार एस टी आर यहाँ पे। सो अगर लेट्स से आपको 40 बाइट्स रीड करने हैं, 40 कैरेक्टर्स रीड करने हैं फाइल में से, तो आप यहाँ पे दोगे 40 कितना रीड करना है और वो रीड करके कहाँ पे रखना है। सो अगर आपने यहाँ पे फाइल पॉइंटर फाइल में हेलो हाउ आर यू ऐसे करके है, और आपको वो पूरा का पूरा रीड करना है, उसका लेंथ यहाँ पे देना है, और जो भी रीड करेगा वो रीड करने के बाद दैट विल बी स्टोर्ड इनटू द एसटीआर। विल सी द प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। Okay, now writing a formatted string. Writing a formatted string, this function is basically used for writing formatted strings to a file, where we can use the format specifier, control D, sorry, %D, %F, %C and all, right? %S, that was previously opened using the file pointers, right? So this is a syntax of fprintf, file star fp, const star control string, then the variable arguments. Same thing, writing to the file in a format, so writing a formatted string is using fprintf, whereas reading a formatted string it will be using the fscanf, right? So you can read the formatted string from the file. So the syntax is what? Fscanf. Okay, this is a printing mistake. This is int fscanf file star fp const char star control string and then the variable arguments. Now let's say कि आप फाइल रीड कर रहे हो, राइट, और आप कहीं पे लेट्स से आपका फाइल है 20 लाइन का और आपके ऑलरेडी 12 लाइन रीड हो चुके हैं, लेकिन समहाउ आपको फिर से नंबर 1 लाइन पे जाके फर्स्ट पोजीशन से फिर से रीड करना है, तो आप एक फंक्शन यूज कर सकते हो, रिवाइंड। रिवाइंड फंक्शन क्या करेगा कि आपका जो फाइल पॉइंटर अभी जहां तक है वहां से निकाल के वो शुरुआत में डाल देगा। ओके, एंड ऑफ फाइल, ये फंक्शन हमको पता देता है कि हम फाइल के एंड तक पहुंच चुके हैं या नहीं, नहीं, राइट। सो ईओएफ इज काइंड ऑफ मैक्रो। अगर आपको चेक करना है कि फाइल पॉइंटर एंड ऑफ फाइल तक आना है या आया है या नहीं, कि आप अगर रीड कर रहे हो फाइल, रीड करते करते आपके पास कोई तो कंडीशन होनी चाहिए कि जिस कंडीशन को आप चेक करके वहां से बाहर निकल सको, तो वो कंडीशन होती है ईओएफ, दैट इज एंड ऑफ फाइल, और एफईओएफ। Okay, when a file is opened for a binary input, an integer value is equal to what? EOF, that is end of file may be read. The input routine will indicate an EOF in such a case, even though the end of file has not reached. Okay, now what is the syntax? It returns integer FEOF and file star FP is the file pointer. Okay, now what is ftell? अगर आपने लेट्स से आपके पास आपका आपका फाइल के अंदर 20 लाइंस है और 20 लाइन में से आप ऑलरेडी 13th लाइन पे रीड कर रहे हो, तो अभी आपको पता कैसे चलेगा कि आपका जो फाइल पॉइंटर है कहाँ पे है? तो ftel एक ऐसा फंक्शन है जो आपको रिटर्न करेगा कि नहीं, आपका फाइल पॉइंटर किस एड्रेस पे है, राइट, कौन से लोकेशन पे है अभी। ओके, सो इन ऑर्डर टू कीप अ ट्रैक ऑफ द पोजीशन वेयर इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस टेक्स प्लेस एट द पॉइंटर basically maintained in the file structure. So ftell gives the current location of the current active pointer. So ftell जो भी आपको फाइल पॉइंटर कहाँ पे है, जिसका भी आपको लोकेशन पता लगाना है वो, तो वो रिटर्न करेगा करंटली वो फाइल पॉइंटर है कहाँ पे। नेक्स्ट, सेटिंग द करंट फाइल पॉइंटर पोजीशन। अभी हो सकता है कि आपको जो फाइल पॉइंटर है वो कहीं और जगह पे सेट करना है, मे बी आपको एंड ऑफ फाइल पे जाना है, मे बी आपको फाइल की शुरुआत में रहना है या फिर फाइल के मिडल में जाना है, राइट। तो fseek करके जो फंक्शन है उससे आप आपका जो फाइल पॉइंटर है उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हो बाय स्पेसिफाइड नंबर ऑफ बाइट्स फ्रॉम द स्टार्ट करंट पोजीशन और एंड ऑफ द स्ट्रीम रीच। सो उसका सिंटैक्स क्या है? fseek फाइल स्टार fp लॉन्ग इंट ऑफसेट एंड इंट ओरिजिन। ओरिजिन से आपको कहाँ पे जाना है, कितने ऑफसेट पे जाना है, राइट, फाइल स्टार fp। नाउ हियर इज द ऑफसेट
द नंबर ऑफ बाइट्स बियॉन्ड द ओरिजिन, राइट। सी नाउ अगर आपने यहाँ पे ऑफसेट में लग दिया सिक अंडरस्कोर सेट, या फिर आप जीरो भी लिख सकते हो, उसका मतलब क्या, बिगिनिंग से आगे जाओ। सिक अंडरस्कोर करंट और वन अगर आपने रखा तो करंट फाइल का पोजीशन जो है वहां से आगे जाओ। सिक एंड और टू, और व्हाट डज दैट मीन कि एंड ऑफ द फाइल। सो ये ऑफसेट, ये तीन ऑफसेट्स होते हैं। सिक अंडरस्कोर सेट मींस जीरो, सिक अंडरस्कोर करंट दैट इज वन, और सिक अंडरस्कोर एंड, विल सी दिस practically. Yeah. Now read the block of data from the file. अभी आप क्या हो सकता है कि अपना बाइनरी में क्या होता है ना, इन अ बाइनरी फाइल्स यू रियली कैनॉट रीड यूजिंग एफ पुट एस एफ गेट एस, क्योंकि वहां पे स्ट्रिंग्स रीड होते हैं। यहाँ पे अगर आपको बाइनरी फाइल से आप ब्लॉक्स रीड करोगे, ब्लॉक्स रीड करने के लिए क्या होता है, एफ रीड, ओके। और अगर राइट करना है तो एफ राइट होता है। एफ रीड मतलब क्या रहेगा, वॉइड स्टार बफर साइड अंडरस्कोर टी, साइज अंडरस्कोर टी, एक मैक्रो है। सो इट इज बेसिकली नंबर ऑफ बाइट्स, आप कितने बाइट्स रीड करना चाहते हो, राइट। एंड देन कहां से रीड करना चाहते हो, फाइल स्टार एपी से, तो वो रह जाएगा बफर के अंदर। जो भी आप वॉइड स्टार बफर दोगे उसके अंदर वो ब्लॉक चला जाएगा रीड करके। राइट ब्लॉक ऑफ डेटा टू अ फाइल मतलब एफ राइट से कर सकते हो। एफ राइट कॉन्ट स्टार बफर, वाई वॉइड, वो एक किसी भी टाइप का डेटा टाइप का हो सकता है, राइट, दैट्स वाई। नाउ लेट्स सी हाउ दिस थिंग्स कैन बी डन practically. Okay, so very first thing we will see what is fget c and fput c. करेक्ट। अभी देखिए, अगर आपको किसी फाइल के साथ डील करना है तो मैंने वेरी फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज व्हाट, फाइल। एक फाइल जो है उस टाइप का एक पॉइंटर लेना है हमको, फाइल स्टार एफपी। बाद में किसी फाइल के साथ अगर आपको कुछ भी ऑपरेशन करना है तो उसको फाइल को ओपन करना जरूरी है और क्लोज करना जरूरी है। तो सबसे पहले हम उस फाइल को ओपन करेंगे यूजिंग एफ ओपन। नाउ यहाँ पे हम फाइल का लोकेशन देते हैं, कौन सी फाइल लोकेशन हमको ओपन करनी है और कौन से मोड में। तो अभी मैंने यहाँ पे दिया है ई टेस्ट आउटपुट वन डॉट टी एक्स टी एंड राइट मोड में। अभी देखिए, आई विल शो यू लाइक ई ड्राइव पे ऑलरेडी मैं अभी आउटपुट वन की जगह पे लिखता हूँ आउटपुट टू, ओके। नाउ लेट मी राइट इट लाइक आउटपुट टू। ओके, अगर यहाँ पे आउटपुट टू है तो यहाँ पे भी आउटपुट। अभी यहाँ पे क्या होगा, ओके, ये फाइल तो एग्जिस्ट है नहीं, आउटपुट टू एग्जिस्ट नहीं है। ई टेस्ट, देखो ये वाला ई है, ई के अंदर टेस्ट, टेस्ट के अंदर यहाँ पे आपको आउटपुट टू दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अभी ये फंक्शन क्या करेगा, इस फाइल को क्रिएट कर देगा राइट मोड में, एंड देन हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिया हुआ है, हेलो वेलकम टू द फाइल हैंडलिंग इन सी, ओके। देन कैरेक्टर, अगर ये फाइल ओपन करते वक्त कुछ प्रॉब्लम आया, राइट, तो यहां से हमको नल रिटर्न होगा, तो एफ क्या हो जाएगा, नल। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, या फिर कुछ देयर इज समथिंग व्हिच इज नॉट वर्किंग फाइन, राइट, सो फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे, अगर फाइल पॉइंटर ही नल है तो हम उस पर कुछ ऑपरेशंस कर ही नहीं पाएंगे। तो अभी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, नाउ ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग को हम एक एक कैरेक्टर रीड कर रहे हैं, और एक एक कैरेक्टर हम कहाँ पे उसको राइट कर रहे हैं इस फाइल के अंदर। तो ये देखो आई इज इक्वल टू जीरो, जब तक स्ट्रिंग आई नल कैरेक्टर तक नहीं पहुंचता आई प्लस प्लस करना है। सो और उसके बाद क्या करो, इफ एफ पुट सी मतलब क्या, राइट करो, क्या करो, कैरेक्टर राइट करो। कौन सा कैरेक्टर, स्ट्रिंग आई। अभी स्ट्रिंग आई, पहले आई जब जीरो रहेगा एच, एच को राइट करो एफपी में, एफपी क्या है, ये वाला फाइल के अंदर राइट करो। उसके बाद इस फॉर लूप को आगे जाएगा, फिर ई ई राइट करो, देन एल, एल ओ राइट। इस तरीके से सभी के सभी कैरेक्टर्स क्या होंगे, राइट होंगे। तो ये होगा फाइल राइट करना। अभी अगर इसी फाइल से आपको रीड करना है तो फाइल राइट करने के बाद फाइल का ऑपरेशन खत्म हो गया, तो हमने फाइल को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, एफ क्लोज एफ पी। नाउ अगर हमको उससे रीड करना है तो लेट्स से अभी हम फिर से उसको ओपन करेंगे, एफ पी इज इक्वल टू व्हाट, सेम फाइल इन रीड मोड। नाउ जब हम रीड करेंगे तो उससे हम रीड कर रहे हैं अभी, सो आई इज इक्वल टू जीरो, और जब तक कैरेक्टर एंड ऑफ फाइल नहीं आता है, क्योंकि इस कैरेक्टर है जो हम रीड कर रहे हैं, तो सी एच इज इक्वल टू व्हाट, एफ गेट सी। एफ गेट सी मतलब क्या, एक कैरेक्टर एफ पी से उठाओ, और जैसे ही उठा दिया एफ बी को आगे सरका दो। तो सबसे पहले वो एच पे रहेगा, उसके बाद जैसे एच रीड हो गया एफ पी चला जाएगा ई पे, ई रीड हो गया एल पे, इस तरीके से एफ पी आगे आगे चलेगा। और जब लास्ट वाला कैरेक्टर रीड हो जाए फाइल से, तो वो
इस लूप से बाहर आ जाएगा और फिर हम इसको रीड कर रहे हैं। और जैसे ये रीड का ऑपरेशन खत्म हो गया इस फाइल पे जिसको हमने ओपन किया था, उसको हम क्लोज कर रहे हैं, राइट। नाउ लेट्स ट्राई टू रन इट। सो व्हेन वी रन इट, it will basically show us what exactly it has done, right? See, अभी ये हमने रीड किया हुआ आउटपुट है, ये जो हमने रीड वाला आउटपुट है, ये वाला आउटपुट है, ओके। नाउ लेट्स सी कि आउटपुट 2.txt बना है या नहीं बना है। सी, आप देखोगे अगर यहाँ पे आउटपुट 2.txt अभी बना है, राइट, दिस राइट नाउ करंट टाइम स्टैम्प, और उसके अंदर ये वाला डेटा चला गया, हेलो वेलकम टू द फाइल हैंडलिंग इन सी। अंडरस्टूड? इस तरह से आप एफ गेट सी और एफ पुट सी से वर्क कर सकते हो। Now, how to deal with the f get s and f put s? तो यहाँ जहां पे f put c और f get c हमको एक सिंगल कैरेक्टर से डील करवाता है, f get s कंप्लीट स्ट्रिंग से डील करवाता है। अभी देखिए, ये सेम स्ट्रिंग है, हेलो वेलकम टू दिस फाइल्स हैंडलिंग इन सी, राइट। अभी हम लोग क्या करें, इसको आउटपुट 2.txt अपेंड मोड में ओपन करेंगे, ओके। अपेंड मोड मतलब क्या हो गया कि ऑलरेडी जो कंटेंट्स है उसको टच नहीं करना है, नए कंटेंट उसमें खाली ऐड कर दो। तो ऑलरेडी ये वाला, तो उसमें उसके अंदर एक स्ट्रिंग है, तो और एक वाला जो स्ट्रिंग है, राइट, ये वाला स्ट्रिंग फिर से चला जाएगा। तो हम लोगों ने ये वाला फाइल ओपन किया ए प्लस मोड में, अगर नल है तो फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। अगर एफ पुट एस स्ट्रिंग, तो एफ पुट एस क्या करेगा, राइट करेगा, राइट क्या करेगा, इस स्ट्रिंग को राइट करेगा इस फाइल के अंदर। कौन सी स्ट्रिंग? इस स्ट्रिंग को राइट करेगा इस फाइल के अंदर, राइट करेगा। अपेंड है मतलब एट द एंड, जो एग्जिस्टिंग कंटेंट्स है उसको टच नहीं करेगा, ओके। देन अगर वो राइट नहीं कर पाया तो नॉन जीरो रिटर्न करेगा, सो इट विल से कुड नॉट राइट। लेकिन अगर उसने जीरो रिटर्न किया मतलब क्या, सक्सेसफुली राइट किया। जैसे ही राइट हो गया हम लोगों ने इसको क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, ओके। नाउ लेट्स सी, आप अभी जब भी उसको, अभी हम, ये हो गया राइट एफ पुट एस, अभी हम उसको रीड करेंगे, राइट। व्हेन यू ट्राई टू रीड इट फ्रॉम द आउटपुट 2.txt, तो आपको एफ गेट एस यूज करना है। एफ गेट एस मतलब क्या, गेट एस एस टी आर, एक स्ट्रिंग है जिसमें हम रीड करेंगे, जिसके अंदर रीड होगा। कहां से रीड होगा, एफ पी से रीड होगा। कितने कितने कैरेक्टर्स रीड होंगे, 50-50 कैरेक्टर्स हम रीड कर रहे हैं, और रीड करने के बाद उसको हम क्या करें, प्रिंट कर रहे हैं, राइट। इट इज एक्चुअली नॉट कुड नॉट, या, सो दिस शुड नॉट बी हियर एक्चुअली, ओके। सो नाउ लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। सी ट्रान, और देखिए 50 कैरेक्टर्स यहाँ पे हम लोगों ने, ये जो प्रिंट हो रहा है ये 50 कैरेक्टर्स प्रिंट हो रहे हैं, कितने हैं, 50। So if you look at this, right, hello, welcome to file handling in C, hello, comma and welcome, E is not है, इधर 50 कैरेक्टर्स ओनली उसने लिया हुआ है, ओके। अगर आप इसको 100 कैरेक्टर्स कर देते हो तो वो 100 कैरेक्टर्स रीड करने की कोशिश करेगा, करेक्ट। सी नाउ इट इज ट्राइंग टू रीड द 100 कैरेक्टर्स, राइट। अभी आप अगर फाइल देखोगे, आउटपुट डॉट आउटपुट 2.txt हमने उसको 3 बार रन किया, राइट। फर्स्ट टाइम पुट सी से एक बार, और अभी जो एफ पुट एस से 2 बार रन किया, तो इसलिए ये अपेंड हो गया, देखिए, राइट। लेकिन अगर हम इसको अपेंड मोड से निकाल देते हैं और सिंपल इसको डब्ल्यू मोड पे रखते हैं, तो क्या होगा, वो मे बी वो जो एग्जिस्टिंग कंटेंट है उसको क्या कर देगा, वाइट ऑफ कर देगा। सी नाउ अगर आप देखोगे यहाँ पे, राइट, आउटपुट डॉट टीएक्सटी में अगर आप देखोगे, देखो पहले के जो कंटेंट्स थे वो वाइप ऑफ हो गए, और अभी है वेलकम टू फाइल हैंडलिंग इन सी, इतना ही है, राइट। सो दैट्स अ डिफरेंस, अगर आप W से ओपन करते हो और A प्लस से या फिर A से ओपन करते हो, तो A मतलब एग्जिस्टिंग कंटेंट्स को टच नहीं होगा, ओके। नाउ अभी हमने जो देखा है, एक सिंगल कैरेक्टर या स्ट्रिंग के साथ हम लोगों ने हाउ टू राइट एंड रीड द कैरेक्टर, हाउ टू रीड एंड राइट द स्ट्रिंग। लेकिन अगर आपके पास कुछ स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को आपको किस तरीके से डील करना है, अगर आपको किसी स्ट्रक्चर को राइट करना है, राइट। अभी आपके पास अगर पर्सन है, लेट्स से पर्सन करके एक स्ट्रक्चर है जिसका एक आईडी है, जिसका फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, और अभी ऐसे पर्सन तो मतलब बहुत सारे होंगे, मे बी 50,000, राइट। तो अगर ऐसे पूरा का पूरा रिकॉर्ड अगर आपको प्रिंट करना है या फिर राइट करना है फाइल में, तो आप कैसे राइट करोगे, और अगर रीड करना है तो कैसे रीड करोगे, तो उसके लिए फंक्शंस है एफ रीड एंड एफ राइट। वो ब्लॉक ऑफ ब्लॉक्स रीड करता है डायरेक्टली, ब्लॉक्स क्या करता है, राइट करता है। देखिए अभी हम अपने पास, सो वी हैव दैट एक्चुअली,
here, right? I'll maybe walk you through, guys, through it. So let me just comment out this part, right? Now, what is this function is doing? Okay, it is now open the file. It is actually creating the file e test person.dat. Instead of that, maybe, right, let's have this as a txt, right? person.txt. now इसको रीड राइट मोड में ओपन कर रहे हैं, मतलब अगर ये फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट भी है तो उसको ओवरराइट हो जाएगा, लेकिन राइट मोड में रहेगी। अगर नल है तो मतलब फाइल ओपन हुई नहीं है अच्छे से। अभी हम लोगों ने दो स्ट्रक्चर्स ले लिए, राइट? स्ट्रक्चर पर्सन पर्सन, एक इनपुट 1 है और इनपुट 2, ऐसे दो पर्सन के स्ट्रक्चर्स है, जिसका एक का आईडी 1 है राकेश सिंह, दूसरा है 2 मोहन गोगी। ओके, अभी हमको ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर्स क्या है, राइट करने हैं फाइल के अंदर पर्सन डॉट टी में। सो अभी क्या होगा, एफ राइट हम यूज करेंगे। एफ राइट क्या राइट करना है, उसका एड्रेस, कितना राइट करना है, उसका साइज, कितने ब्लॉक्स, एंड देन आउट फाइल। सिमिलरली सेकंड वाला जो है, सेकंड के लिए भी सेम, राइट? सो अभी यहाँ पे दो जो पर्सन है, दो पर्सन का डेटा जो है वो ऑलरेडी इसमें क्या हो गया, राइट हो गया। नाउ अगर राइट सक्सेस नहीं रहा, राइट, देन द कंटेंट्स आर, मतलब अगर एफ राइट सक्सेसफुल रहा, राइट, इट मींस व्हाट, द कंटेंट्स आर रिटन सक्सेसफुली। अगर नहीं है तो देयर वाज सम एरर एंड देन क्लोज फाइल। नाउ अगर आप यहाँ पे देखे हुए तो पर्सन डॉट टीएक्सटी ऐसा कुछ है नहीं, पर्सन डॉट डैट है बट लेकिन पर्सन डॉट टीएक्सटी नहीं है। तो अभी हम इसको अगर रन करने की कोशिश करेंगे, व्हाट इट विल बेसिकली गिव, सी, सो कंटेंट्स टू द फाइल रिटर्न सक्सेसफुली। अभी हम उसको ओपन करके देखते हैं। ये देखिए पर्सन डॉट टीएक्सटी अभी रेडी हो गया, अब भी जस्ट बना हुआ है और इसके अंदर ये दोनों के दोनों डेटा चला गया, सी, मोहन को भी, करेक्ट। सो दैट्स हाउ इट इज। आप पूरा का पूरा स्ट्रक्चर भी राइट कर सकते हो, लेकिन अगर यही अगर स्ट्रक्चर आपको रीड करना है तो आप रीड कैसे करोगे? ओके, तो रीड कैसे करोगे? अगर राइट ऑफ एफ राइट से कर रहे हो तो रीड आप कैसे करोगे? एफ रीड से करोगे, करेक्ट। नाउ हाउ दैट इज, हियर इज दैट वन। ओके, सो ये देखो, तब यहाँ पे हम लोगों ने इन फाइल करके एक फाइल का पॉइंटर ले लिया, सेम स्ट्रक्ट पर्सन इनपुट जिसमें हम रीड करेंगे पूरे ब्लॉक को, पर्सन डॉट टीएक्सटी में से हम रीड कर रहे हैं, राइट? रीड मोड में ओपन किए फाइल, अगर सही से ओपन नहीं हुई तो हम लोगों ने यहाँ पे एरर दिया है, लाइक दैट यू कैन डू इट एफ प्रिंट एफ। ओके, नाउ हम लोग तब तक रीड कर रहे हैं, एफ रीड इनपुट के अंदर रीड कर रहे हैं, इतना साइज का डेटा रीड करना है, कहां से? इन फाइल से। इन फाइल क्या है? ये वाला फाइल ओपन किया हुआ है रीड मोड में, और जैसे आएगा हम उसको राइट कर देंगे, मतलब प्रिंट कर रहे हैं कि नहीं, क्या रीड किया हम लोगों ने, इनपुट डॉट आई डी एफ नेम इनपुट डॉट लास्ट नेम, और जैसे ये पूरा ऑपरेशन हो गया हम उसको क्लोज कर देंगे। नाउ लेट्स सी इफ अच्छे से वो दोनों के दोनों रिकॉर्ड्स को रीड करता है या नहीं करता है। सो सी, एक्चुअली दोनों के दोनों रिकॉर्ड अच्छे से रीड हो गए हैं, राइट? या, सो दैट्स हाउ इट इज। सो let's go to the slide show now, right? What exactly we have. So we have already covered like all of the functions of file handling. Yeah. So next video agenda will be what? Memory management. So how do we basically dynamically allocate the memory when we want to use the memory in heap, right? We do that using malloc, calloc, realloc, right? How do we free that memory? What does it mean by memory leak, right? Dangling pointers क्या होते हैं, ये सभी जो चीजें हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट में देखेंगे। ओके, सो guys, that's all actually I had it from this video. Please do not forget to like, subscribe and share if you haven't done so. I wish you happy learning with the Gravity Tech. Thank you.